Today our topic is volume of solid object. We will learn how to calculate the three-dimensional volume of solid objects. So in order to compute or calculate volume, we first uh, need we first going to slice three-dimensional object. Or we take the cross section of the solid object as on the top we have a solid object S, capital S represent a solid object. So what we first take the cross section along x-axis. So this blue region, basically it is the cross section. So you can see the red region, basically it presents solid object, and the blue region, it is a two-dimensional object. So by keeping x constant, so so this is the this blue region of the plane. This plane, basically it is known as cross section or the slice of the three-dimensional object. So for example, if you have a sphere, so whose equation is x square plus y square plus z square is equal to r square. If we fix the value of z, so we get a circular disc. This circular disc, basically it is known as cross section or the section of the three-dimensional object. So so blue region, basically it is the cross section of this solid object by a plane. So since the cross section is starting from x is equal to a to b. So when x is equal to a, the area will be different from at this point. Similarly, when x is equal to b, we have different area of the cross section. The important thing we can see is from this figure that a cross sectional area, basically it is a function of x. As we move from x is equal to a to b, area of the cross section blue region is changed. So therefore we say the area, basically area of the cross section, it is a function of x variable. So what if we compute, if we find all cross section area, so from a to b, so we can calculate sigma a of x. So if we instead of and we take the limit n tends to infinity, so using the Riemann summation, it becomes definite integral a of x d of x. So basically this definite integral of a of x dx basically represent volume of the solid object. Okay, so now here, so therefore since how to define the volume formula? Formula number 3, let capital S be a solid object bonded by two parallel lines which is perpendicular to x-axis, x is equal to a and x is equal to b. If in the interval a and b, the cross-sectional area which is perpendicular to the x-axis, capital A of x is capital A of x, then the volume of the solid object, which is v is equal to definite integral A of x. Okay, clear? So the volume v, basically it is equal to definite integral A of x dx, where capital A of x, actually it is the cross-sectional area of S which is perpendicular to x-axis. Sometimes the cross-sectional area, it will be perpendicular to y-axis. So then v is equal to definite integral A of y d of y. Okay, so now let's see, we will learn how to compute the volume of a right pyramid. So this is a right pyramid. If we see
the cross-sectional area of this right pyramid is a square, and we are assuming y-axis is the height of this pyramid. The important thing, this is the base area. So what we assume, the small a is the length of the base, and this is the length of this x-axis. So and O is the origin. So therefore, the coordinates of the point C are half a, and in this case z is 0. So now we want to derive. हाँ आ जाओ इधर आ Hello. So we want to derive the volume formula for the volume of the right pyramid. So I will consider a cross-sectional area on xy plane. So I get a rectangle whose, this is the baseline whose length is half a, and a height, in total height of height is basically h. Small h is the total height. This is the intermediate point on y-axis. So what we assume, this height is small y, and the width of this point, width of this area is a small s. Therefore, half of this width will be half s. So what it is happening here. We have a rectangle, and we draw two triangles. OCB, it is a triangle, and there is a small triangle here, which is, this is the small triangle. So we use the property of the similar triangles. The height of a small triangle, this is the width of the small triangle divided by width of the large triangle, equal to height of the small triangle, which is h minus y, divided by height of the large triangle. By solving this equation, we find the value of s is equal to a over h minus y. So this s, basically it represents the s represent the length of the side, which is cross-sectional area. So since s is the length of the square, so therefore area, it will be s square. Okay, so therefore we say ay is equal to s square, and here we put the value of s here, so it becomes a square over h square, h minus ay whole square. So in this way we have determined the cross-sectional area a of y. Since we want to determine the volume of the right pyramid, so therefore we will integrate this a of y with respect to y. So therefore volume of this solid object, it will be equal to definite integral from 0 to h. Since height of the pyramid is small h, therefore we have limit of the integration from 0 to h. A of y, we put the value of a of y from the last equations. So after integrating integral of we'll find the integral of this, we will evaluate this integral. So it will be equal to y h minus y whole cube divided by 3. Then we substitute the value of upper limit and lower limit. Finally we see the volume of the right pyramid, it is equal to 1 upon 3 a square h. So this formula is used to compute the volume of the pyramid. Similarly, there is another concept is used to calculate the volume of the solid, which is known as solid of revolution. So basically, in a solid of revolution which is generated by revolving a plane about a line that lies on the same plane. So the axis line is known as axis of rotation. For example, we have here a rectangle. There's a rectangle on xy plane. If I rotate this rectangle along this x-axis,
So it will generate it will generate a right circular cylinder. If we rotate this region about this x-axis, so it will generate right. Similarly, if there is a circular disc, if it is rotated along any axis, along x-axis, suppose this is a semicircle whose equation is y is equal to square root a square minus x square. If it is, this circular disc is generated along x-axis, so we will get a sphere. Similarly, if there is a triangle, if this triangle is rotated about a line, then it generates a solid cone. Similarly, if this is the rectangular region, if it is generated, then it gives the hollowed right circular. So by rotation, if a plane is rotated by a line, then it generates a solid of revolution. So through a plane, by rotation, we generate a solid object which is known as solid of rotation. So in this case, now the question is how to find the volume of solid of rotation. So since if there is a region, suppose this is the graph, this is the region capital R, which is bounded by y is equal to f of x and x-axis. So this is the plane. If this plane y is equal to f of x is rotated about x-axis, it will generate a solid of revolution. Okay, so so therefore in this situation, the volume. So what we assume, that solid object which is generated is it is when we revolve this region capital R along x-axis, it produces a circular disc, and we know the area of this circular disc is usually pi a square, but in this case the radius of this circular disc is f of x. Therefore, area of this circular disc or cross sectional, it will be pi f of x square. The area of this cross section is pi f of x square. Therefore, the volume of this solid of revolution, it is equal to, in definite integral, pi square of f of x dx. Okay, so this formula is used. Okay, v is equal to definite integral pi square of f of x dx. So we use this formula to compute the volume of solid of revolution. Let's see example number 3. So here we have given a y is equal to square root x. So in this case the function is y is equal to f of x. It is f of x is square root x over the interval 1 and 4. So therefore we use in this case we use this formula, v is equal to definite integral pi square of f of x. In this case f of x is square root x, so it becomes f of x square becomes x. So this is integral pi x dx. The lower limit is 1 and upper limit is 4. The integral of x is x square over 2. So therefore we find we substitute the upper limit and lower limit here. So it becomes 15 pi over 2. Similarly, see example number 3. In this case, we have a circular disc whose equation is given by y is equal to square root r square minus x square. If we rotate this region, circular disc, about x-axis, so we will use the formula v is equal to definite integral pi square of f of x dx. So in this case, f of x is basically square root r square x square. So therefore, we put the value f of x here. So now next we integrate the integral of x square. It is x cube over 3. The integral of r square dx is x. Next क्विज कब होगा? ये क्विज जो है बस आखिरी आधे घंटे में होगा. सही है, ये 6.2 करने के बाद हम जो क्विज कर लेंगे, छोटा सा एक क्विज दूंगा. ओके, सो आपने देखा कि यहाँ पर व्हाट वी हैव प्रूव, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 pi r cube.
तो ये फॉर्मूला आपने देखा, सिंस ये वॉल्यूम जो है स्फीयर इट इज जनरेटेड बाय ए सर्कुलर डिस्क, अगर आप किसी भी सर्कुलर डिस्क को एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे तो इट जनरेट sphere. This volume of the sphere is calculated using, I mean, solid of revolution. Is it clear? तो आपने देखा कि इस तरह से हम जो है solid of revolution की मदद से भी solid objects के वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, ये जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया डेफिनेट इंटीग्रल पाई स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दिस द रीजन आर इज बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस था, सही है. लेकिन बात पर क्या होता है, region is bounded, in this case when the region it is bounded by two functions. You see, ये figure, this figure where region capital R is bounded by two functions here. Upper function is y is equal to of f of x and the lower function is g of x. This region capital R, it is bounded by two functions. Then the formula is slightly changed. तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, when the region R is bounded by two functions, the volume of the is equal to definite integral pi square of f of x minus square of g of x dx. अच्छा, जब when region R is bounded by two functions, तो आपके पास जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो बीच में उसमें जो हॉलो होगा, ये खास बात है. अगर if a solid object is produced by region which is bounded by two functions, तो उस सूरत में उसमें जो है क्या होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं बीच में एक होल मौजूद होगा. तो जब भी when the region R is bounded by two functions, तो आप वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. देखिए डेफिनेट इंटीग्रल पाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो ये फॉर्मूला नंबर 6 को आप यूज करके आप जो है जो सॉलिड जनरेट होता है तो उसको आप उसके लिए आप जो है यूज करते हैं. तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें. मेरा आज का तो ऑफ, आज घर पे ही हूँ, तबीयत भी ऑफ हो गई मेरी, काम भी करते हैं. So in this case f of x आपके पास 1/2 x square है, g of x is x. So the region is it is bounded by two functions. So therefore, we will calculate using the formula k integral pi square of f of x minus square of g of x dx. तो इसमें f of x dx की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस केस में जो आपके पास जो सॉलिड ऑब्जेक्ट उसका जनरेट होगा उसके तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट, लेकिन शेप देखें एक हॉलो शेप का जो है आपके पास जो है ये होगा. तो बेसिकली हमने ये देखा कि हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन. अब हम जो एक्सरसाइज वी विल सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 की एक्सरसाइज आज कुछ सॉल्व करते हैं, फिर एंड में आपका एक छोटा सा हम जो है एग्जाम लेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, exercise 6.1. Question number 1 is find the volume of the solid that results when the shaded region is revolved about the indicated axis. We have given the graph of the function. The upper function is y is equal to square root 3 minus x and the lower is x axis. So this, and it is revolving along x axis. तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे in order to determine the volume of solid object which is obtained by the revolution about the x axis. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा volume is equal to तो ये देखिए so इस केस में the function जो है f of x क्या है आपके पास स्क्वायर रूट 3 minus x. तो therefore f of x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 minus x हो जाएगा. We evaluate this definite integral. तो इसमें lower limit is -1, upper limit is +3. जैसे कि आप you can see in this graph the lower limit is x is equal to -1 and upper limit is +3 and the function is square root 3 minus x. तो हम क्या करेंगे we will substitute the value in this formula कि v is equal to pi f of x square dx. तो इसको हम definite integral को हम calculate कर लेंगे.
Let's see question number 2 of exercise 6 point. So again, this case mein what is happening here, in this problem, we want to determine the volume of the solid which is obtained by rotation about this shaded region. So this shaded region is bounded by two functions. First function is this y is equal to 2 minus x square, and the second function is y is equal to x. तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पाई डेफिनेट इंटीग्रल f of x square minus g of x square वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो इन दिस केस दिस parabola y is equal to 2 minus x square is the first function f of x, and the lower function is y is equal to x. This is f of x. So यहाँ पर I will use question number 2. Let's say this is the solution of question number 2. So we will use this formula. So in this case, f of x is 2 minus x square, and g of x is x. So therefore it becomes x square. So first of all we simplify the integrand 2 minus x square whole square. It becomes 4 minus 4x square plus x to the power 4. Therefore it becomes 4 minus 5x square plus x to the power 5. So the integral of 4 is 4x. Integral of x square is x cube over 3, and the integral of x to the power 4 is x to the power 4 upon 5. So इसके बाद next we substitute the upper limit of the integration and the lower limit of the integration by substituting x is equal to 1. It becomes 4. It becomes x cube become 1, and x5 actually become 1. So therefore, after simplifying, what we see, volume is equal to 38 pi over 15. So this is the solution of question number 2 of exercise 6.3. The question number 3 is different. In this case, the region is bounded by this shaded region. So the revolution, it is revolving along y-axis. So therefore, in this way, in this case, we will use the formula pi definite integral f of y square dy. So first of all, we find what will be the value of f of y from this form. Since y is equal to 3 minus 2x, so therefore it can be written as 2x is equal to 3 minus y, or x is equal to 3 minus y divided by 2. So f of y will be equal to 3 minus y upon 2. So this is the solution of question number 3. Let's see. So I'm giving the solution. So in this case, since the equation is y is equal to 3 minus f of y, since we want to use formula of f of y, so we rearrange this equation. So it can be written 2x is equal to 3 minus y. Therefore x is equal to 3 minus y upon 2. So we say f of y is 3 minus y divided by 2. ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? आर यू लिसनिंग मी? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कर रहा हूं, तो इसमें हम वी विल कन्वर्ट दिस y is equal to 3 minus 2x, x is equal to 3 minus y upon 2. So this 3 minus y upon 2 actually becomes f of y. तो इस फॉर्मूला में we will substitute f of y की वैल्यू. उसके बाद हम जो है इसको इवैल्यूएट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा. आगे आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we will solve question number 4. Question 5. Okay. So question 5 देखें. Let's see what is the question number 5. तो ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें. इसमें question in this is the question number 5. Function is y is equal to square root cos of x, and it is bounded by x axis. तो हम we will use formula. यहाँ पर क्या हो जाएगा? y is equal to volume will be equal to pi definite integral f of x square. The lower limit is pi by
4 and the upper limit is pi by 2. So this is the solution of question number 5. Let's see. So therefore आपके पास हो गया volume is equal to pi definite integral cos x dx. The integral of cos x it is sin x. Next we substitute the upper limit and lower limit, so we obtain the solution. Okay, let's similarly you can solve question number 6. The important thing it is it is bounded by two functions. The upper function is y is equal to x square and the lower function is y is equal to x cube. So here v is equal to क्या हो जाएगा, pi definite integral f of x square minus g of x. तो यहाँ पर हमने I have solved question number 6 here. Just a minute. This is the solution of question number 6. So upper function is x square, so square of x square, so it becomes definite integral pi definite integral f of x square minus g of x square. So next after you find the definite integral from 0 to 1, x4 minus x is integral of x4 is x5 over 5, integral of x6 is x7 over 6. Next substitute the upper limit and lower limit. You see the volume is 2 pi upon 3. Let's see the question number 9. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये आप 2000 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है. So find the volume of solid whose base is a region bounded by the curve y is equal to x square, यानी y is equal to f of x is x square, and the x axis from x is equal to 0 to 2. So in this case f of x is x square. So हम यूज करेंगे फॉर्मूला volume is equal to definite integral from 0 to 2 f of x square dx. So therefore the solution is given here. So it will be pi definite integral x to the power 4 dx. So after simplifying you find the value of the definite integral, which will be equal to pi by 32 pi divided by 5. Let's see the solution of question number 10. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया है. जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है. मुझे 11 पे जाना चाहते हैं. हाँ क्या एक मिनट 1 और 2 में 1 2 समझना तो उसमें जाना. देखिए 1 2 में आ जाइए समझ. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को मैं दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ. तो क्वेश्चन 1 में पहले आप देखें, आपके पास इन दी एक्सरसाइज आपके पास फिगर गिवन है. देखें आपसे कहा गया है इन क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. तो आपके पास दिस इज द रीजन which will revolve करेगा about x axis. तो उससे वॉल्यूम जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जनरेट होगा उसका हमें वॉल्यूम करना है. सो रीजन, दिस इज द रीजन R which is bounded by the function y is equal to square root 3 minus. तो f of x आपके पास क्या है, square root 3 minus x, और x is ranging from -1 to 3 and it is revolving along x axis. तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कि volume is equal to pi definite integral -1 to 3 f of x square. तो since f of x is square root 3 minus x, तो square of f of x क्या हो जाएगा 3 minus x. तो देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से हमने कहा कि v is equal to pi definite integral from 0, यहाँ पर 0 है, -1 to, यहाँ पर definite integral की लिमिट क्या है -1 से 3 minus x dx. तो फिर इसका आपने 3 का इंटीग्रल क्या हो गया 3x, x का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 3. तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो आप कह रहे हैं, क्वेश्चन 2 ये था कि आपके पास ये ग्राफ है. तो क्वेश्चन 2 में दिस रीजन शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय टू फंक्शंस. फर्स्ट फंक्शन देखें ये पैराबोला है y माइनस 2x स्क्वायर है, और सेकंड फंक्शन y ऑफ x है. तो यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डेफिनेट इंटीग्रल स्क्वायर ऑफ f ऑफ x माइनस स्क्वायर ऑफ g ऑफ x dx. सही है. तो ये जो अपर फंक्शन है
दिस इज अपर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये लोअर फंक्शन है। तो इसको ये क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, जो v इज इक्वल टू पाई डेफिनेट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन 2 यू सी, तो यहाँ पर देखें आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह पे है f of x is replaced by 2 minus x square and g of x is replaced by x। तो उसके बाद आपको सिंपली डेफिनेट इंटीग्रल आपने सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, एक मिनट देखिए, क्वेश्चन 9 को मैं सॉल्व करना, क्वेश्चन 9 एक मिनट है मुझे, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्वेश्चन 10 देखें, क्वेश्चन 10 में आपसे कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड whose base is region bounded between curves y is equal to secant x and x axis। तो यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डेफिनेट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली secant x। तो यहाँ पर आप इस तरह लिखेंगे, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आपके पास secant x है, तो आपने लिखा है पाई डेफिनेट इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इट इज टेंजेंट एक्स। सिंस द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर integral of sec square x is tangent x। Next we substitute the upper limit and lower limit, x is equal to pi by 3 and x is equal to pi by 4। so x is tangent pi by 3 जो है आपको मालूम है कि 1 upon square root 3 होता है, tangent pi tangent 63 और tangent 45 pi by 4 जो है 1 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप 10 जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 to 18 ये आपने सॉल्व करना। मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ, ये बाकी सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आई मीन के फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड व्हिच रिजल्ट्स व्हेन द रीजन enclosed by the curve is revolved along x axis। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें, so we have two function y is equal to square root 25 minus x square। it is circular disk, सर्कुलर सेमी सर्कुलर डिस्क, और ये y इज इक्वल टू 3 जो है ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो वी फर्स्ट इन ऑर्डर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द ग्राफ ऑफ दिस टू फंक्शंस। अच्छा, ग्राफ बनाना समझ लिए बहुत जरूरी है, उससे आपको अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन का पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ये, चूंकि जैसे मैंने कहा कि ये स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू स्क्वायर 25 माइनस ए स्क्वायर जो है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 25 माइनस, एक मिनट, ये क्या था, ये असल में 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये यहाँ पर ये ए स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर है। तो सिंस इट इज वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इट रिप्रेजेंट सेमी सर्किल। सो it is the semicircle whose radius is 5। so therefore इसके जो है if this is the center of the semicircle, then this coordinate is -5 and this end coordinate is +5। अब आपके पास the second function is y is equal to 3, it is a horizontal line, so this is the y is equal to 3। तो अब y is equal to 3, so we will determine the volume of this shaded region। okay, so this is circular disk and it is bounded by y is equal to 3। so we calculate the coordinates of these end points। so when y is equal to 3, if we substitute y is equal to 3 here, so we calculate the value of x here, and we put y is equal to 3, so x will be equal to -4 or plus, sorry। अब इसमें देखें, जब आप x y की जगह पे 3 रखेंगे तो ये 9 स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर बिकम्स 16। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 + 4। तो यहाँ पर x, तो देयरफॉर
we use this formula, volume is equal to pi integral from -4 to +4 25x square minus 9. दिस इज द सेकंड फंक्शन. तो इस तरह से देखा आपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया. तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन नंबर 11 से 18 जो है ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आप सॉल्व करने हैं. ओके